हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रवेश कुमार है और मैं यहाँ पे एसटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल साइंस में बी फार्मेसी का लेक्चरर हूँ। और आज हम यहाँ पे आयुर्वेदा क्लास के अंदर आज हाजमे के लिए पाउडर बना रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा है कि हिंगवष्टक चूर्ण। ये पाउडर हमारे पेट में दर्द, गैस, अपच आदि बीमारियों में बड़ा काम आता है। ठीक है, और आज हम सब स्टूडेंट मिल के यहाँ पे इस पाउडर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रैक्टिकल सेशन के अंदर पहले भी हमने यहाँ पे काफ़ी दवाइयाँ आदि बनाते रहते हैं और आगे भी, और यहाँ के स्टूडेंट्स हम सब मिलके और भी कोई ना कोई प्रैक्टिकल करते रहेंगे। थैंक यू। मेरा नाम चंद्रवती है। मैं एसटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। मैं बीएससी 3rd ईयर ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ BSc 3rd ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Well, hello everyone. My name is Shalga Sharma. I have done masters in mental health psychiatric nursing. I'm having 4-year experience after my MSc, and I'm working as a assistant professor in a very reputed college named as ST College of Nursing. This college came into existence in 2008 with the sharp vision and tireless efforts of Sita Rani Tilakraj Education and Charitable Society. This society working under the dynamic chairmanship of Mr. Harish Kapoor. He is the dean of our college, and I must say he is so cooperative and so genuine person. He is so down to earth that he always maintain equality among students as well as their faculty members. And just because of this, we feel so secure and so safe in this organization. If I talk about the locality of this organization, then this organization is located at Hoshiarpur, 9 km away from Hoshiarpur city at village Mehla Wali. This college comes under Baba Farid University in Health Sciences and affiliated by INC and PNRC, where INC stand for Indian Nursing Council and PNRC stand for Punjab Nursing Registration Council. Moreover, if I talk about the courses which are offered in this college, there are near about 3 or 4 courses which are offered by our college. For instance, BSc Nursing, which is a 4-year degree program. GNM stand for General Nursing Midwifery. This is a 3-year diploma course. And pharmacy in Ayurveda, which is 2-year diploma program. Now, if I talk about the infrastructure of this college, then the infrastructure of this college is so mesmerizing. The building is so spacious, which is equipped with all the laboratories and libraries, along with the separate toilet facilities for the boys and girls, separate facilities of hostel related to boys and girls. Moreover, we provide
co-ed education to all our students. In fact, in our college, we provide education to the students without any discrimination of caste, sex, religion, and race. The students of this college are very punctual, very obliged, and very helpful to each other. And I believe the all credit goes to their spectacular teachers, because these teachers are very expertise in their field. They have good or great command over their practical skills, and nursing is all about practical skills. Moreover, we know that nursing is a very noble profession, where by taking nursing education, nurses can provide effective services to their people, especially those people who are poor and needy. And I believe nursing is a very great profession which will provide a great opportunities to all the individuals, especially related to clinical field, teaching field. In fact, people can move to abroad as well. Apart from this, if I talk about the extracurricular activities, then time to time all the functions are organized, where which is very helpful for the students to enhance their intellectual skills as well as their cognitive skills. For instance, freshers party, sports activities, Nurses Day celebration, and many more things. In fact, the faculty of this college is very cooperative. We are so cooperative and so genuine to each other that we always work in coordination to achieve the organizational goal. Last but not the least, if I talk about the principal, vice principal, and dean of this college, they are very cooperative. They are very helpful. In fact, they are able to understand the problems of students and they deal accordingly. In fact, according to, or I would say with the help of this mass media, I appeal all those students who really wants to take admission in nursing college, they must join this college, because we feel very delightful to provide effective services to you. And I believe students are the backbone of the nation. So this is all about our college. Thank you. Have a nice day. मेरा नाम शिखा शर्मा है। मैं हिमाचल से हूँ। यहाँ पे स्टडी करने के लिए आई हूँ। मैं फोर्थ ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे यहाँ पे फोर ईयर हो गए हैं स्टडी करते हुए। काफ़ी अच्छा हमारा कॉलेज है। स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से हमें करवाई जाती है। टीचर जो हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, वेल एजुकेट हैं, हमें अच्छे तरीके से स्टडी करवाते हैं। और प्रैक्टिकली जो हमारा है स्किल्स है वो भी काफ़ी अच्छी हैं। हमें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग के लिए हॉस्पिटल में भेजा जाता है। हमें वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, उसको कौन सी उसके रिगार्डिंग उसे कौन सी मेडिकेशन देनी है। एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से दी जाती है। यहाँ पे लैब्स हैं, वहाँ पे हमें प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, डेमो दी जाती है, री डेमो हम स्टूडेंट देते हैं। हॉस्पिटल में हम प्रैक्टिकली हमारा अपना होता है जो हम प्रोसीजर करते हैं।